Hi everybody, welcome back to Psyche's with Nandini. This video will talk about the rest of the chapter 7. This video might be a bit longer. Feel free to listen to me in 1.5 or 2x. That's completely fine, whatever suits you. But some concepts are covered in the other video, so do check that out before you start watching this video. So last video mein humne cover kiya tha, we talked about group. We talked about the special kinds of groups जो होते हैं team, audience and crowd, and then we talked about why do people join groups, जिसके लिए मैंने आपको एक acronym दिया था which was called 4S, 1G and 1P. And another thing that we covered was the stages of group formation, जिसके लिए मैंने आपको एक और acronym दिया था which was called first SUNPA. So forming, storming, norming, performing and adjourning. Here we'll talk about the factors that are important for group formation. What is a group structure and what are the elements of a group structure? What are the different types of groups? Then we'll talk about social loafing, which is a very, very important topic. And then we'll talk about group polarization. Okay, so when we talk about the factors that are important for group formation, 3 factors होते हैं. First is proximity. Proximity word का meaning ही होता है distance. So when the distance is less, the group formation is particularly easier. So proximity is one factor. And the next factor which is important for group formation is similarity. अब pop culture में हमेशा reference होता है that opposites attract. But no, actually similar people attract. So इसके 2 reasons मिले हैं psychologist को. The first reason is consistency. This is because as humans we prefer relationships जहाँ पे consistency ज़्यादा होती है. And when people are similar, the relationship is more consistent. Second reason why similarity is important is validation. तो जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जिससे आपकी वैल्यूज मैच होते हैं, बिलीव्स, ओपिनियंस, एटीट्यूड्स मैच होते हैं, तो आपको लगता है दैट योर आइडियाज आर बीइंग वैलिडेटेड, दैट दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक दैट वॉचिंग टेलीविजन इज अ बैड थिंग एंड देन यू फाइंड समबडी हु सेज द सेम थिंग, तो आपको लगेगा कि ओ माई ओपिनियन दैट वॉचिंग टेलीविजन इज बैड is being validated. It's equally important. So इसीलिए validation is another reason why similarity is important, and similarity is another factor that leads to the formation of a group. The third reason behind group formation is common motives and goals. Third reason होता है common motives and goals. अगर आपके motives, अगर आपके goals similar नहीं है तो आप group form नहीं करोगे. For example, if your motive is to get good marks, right, in an exam, and you find people who also have the same motive, तो आप उनके साथ जल्दी से एक group form कर लोगे. So common motives and goals is another reason, is another factor which is important for the formation of a group. Now let's talk about the elements of a group structure. तो अब आपने group form कर लिया, उस group का एक structure होगा. ग्रुप स्ट्रक्चर के कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं. द फर्स्ट एलिमेंट हियर इज रोल्स, सेकेंड एलिमेंट इज नॉर्म्स, थर्ड इज स्टेटस एंड फोर्थ इज कोहेसिवनेस. बहुत सारे हैं तो इनको याद करने का एक बहुत ईजी तरीका है. अब इसके लिए हम एक छोटू सा एक्रोनिम बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड RNSC. I hope you can remember this. So how I remember this was कि एक जगह है which is called Tennessee. I hope you all know that already. So Tennessee से हमने उसको Tennessee बना दिया. So उसमें 4 मेन लेटर्स आ रहे हैं जो हमें सुनाई दे रहे हैं, RNSC. So RNSC. So I hope this is a bit easier for you to remember now. Now let's talk about the different elements of group structure. तो अब यहाँ देखिए. What are roles? Roles are socially defined expectations. The things that I'm highlighting here are very important keywords, so please do keep those in mind. Roles क्या होते हैं? They are socially defined expectations. It refers to the typical behavior that depicts a person in a given social context. You have the role of a son or a daughter, and there are certain role expectations. कि मतलब आपसे क्या behavior expected है. So this includes the behavior expected of someone in a particular role. So for example, if you're a daughter or a son, you're expected to respect elders, listen to them,
and be responsible towards your own studies. Right, so this is roles. इसमें keywords कौन से important है? Again, it's socially defined expectations, typical behavior that depicts a person, role expectations के बारे में इसमें आप ज़रूर लिखना, and इसमें example ज़रूर दीजिएगा about a daughter, a son, a father, a mother, whatever that you like, but do give an example of role expectations. Next, N, right? So that is norms. Norms हमें पता है क्या होते हैं? They are unspoken rules. So also इसमें another key point is expected standard of behavior and beliefs agreed upon and enforced by a group. तो मतलब एक ऐसा standard of behavior जो सबने agree करा है कि हाँ ये तो हमें follow करना ही चाहिए. Right, so that is a norm. So expected standard of behavior agreed upon by a group. ये दो चीज़ें आप ज़रूर याद रखना in this case. So again, I'll underline this. Expected standard of behavior and agreed upon by a group. Third keyword here is unspoken rules. Third element here is status. अब status क्या होता है? Again, important keyword. Relative social position given to group members. Relative social position given to group members. अब इसमें 1 mark का question बनता है, which is I think an exam favorite. So status can be dash or dash. This is a very important question. Status can be ascribed or achieved. Ascribed मतलब जो आपको किसी वजह से मिलता है. So जैसे seniority की वजह से मिला, आप बहुत सालों से उस कंपनी में है तो इसलिए आपको कोई स्टेटस मिल गया. आपकी फैमिली में कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंस पे तो आपको कुछ रोल मिल गया. That is status ascribed. But when you get something because of your hard work, because of something that you completed, because of something that you achieved, that is a status achieved. Another thing that you can write in this case is we all strive to be members of such groups which are high in status or viewed favorably by others. What does this mean? That you always want to be a part of an important group because it is attached to your identity. So you also feel important about it. Then the last important thing here is cohesiveness. Cohesiveness क्या होता है? Very important. It is togetherness, binding और mutual attraction among group members. मतलब जो हमारे ग्रुप को जो जोड़ के रखता है, that is called cohesiveness. When you have a lot of mutual attraction, when you feel that yes, I am a part of this group, you are one group, you have a lot of interactions, attractions, binding, mutual support, all of these are keywords for cohesiveness. So as the group becomes more cohesive, group members start to think, feel and act as a social unit. Members of a highly cohesive group have a greater desire to remain in the group. Cohesiveness refers to we feeling or a sense of togetherness or belonging. It is difficult to leave a cohesive group or to gain membership of a cohesive group. But extreme cohesiveness is really bad because it leads to a phenomena which is called groupthink. This we will discuss in another video. I'll make a separate video just about all the boxes that are covered in the whole of your NCERT. So उस वीडियो को आप ज़रूर देखना because boxes में से questions आते हैं. Right, so I'll just quickly explain cohesiveness एक और बार. When you form a group, you obviously like the people that are in your group. You obviously have good feelings for those people. आपको लगता है हाँ ये मेरे ग्रुप का पार्ट है. So that is called cohesiveness. अब cohesiveness जब बहुत ज़्यादा हो जाए then it's bad because आप ऐसे इमेजिन करो दैट यू हैव अ फ्रेंड ग्रुप जहाँ पे आप अपने ओपिनियंस नहीं रख पा रहे. यू फील दैट अगर आप कुछ और अपना ओपिनियन दोगे तो ग्रुप टूट जाएगा, लोगों को बुरा लग जाएगा. दैट इज़ अ साइन ऑफ एन एक्सट्रीमली कोहेसिव ग्रुप विच इज़ नॉट गुड. लोगों को जनरली एक कोहेसिव ग्रुप में एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है और एक कोहेसिव ग्रुप से एग्जिट लेना भी बहुत मुश्किल होता है. सो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट टॉपिक दैट वील कवर टुडे इज टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. So in your syllabus there are 3 types of groups that we'll study about. There is primary versus secondary, there's formal versus informal, and there is in-group versus out-group. The group that we'll be talking about is primary versus secondary. ये बहुत important question है. It usually comes for 3 marks or maybe even 4 marks. So अगर 3 marks का है तो you can write 3 points and 4 marks का है तो you can write 4 points.
So primary groups are pre-existing formations given to an individual. यहाँ पे ये बहुत important है to mention pre-existing formations, मतलब वो पहले से बने होते हैं और वो इंसान को दिए जाते हैं. You don't have a choice to join that group. So primary group is primary group में आप लिखेंगे pre-existing formations given to an individual. सेकेंडरी ग्रुप इंडिविजुअल जॉइंस बाय चॉइस. सो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो स्कूल है मैंने डिसाइड किया ओके आई वांट टू गो टू दिस स्कूल, सो आई एम जॉइनिंग इट बाय चॉइस, राइट. सो दैट इज अ सेकेंडरी ग्रुप. देन प्राइमरी ग्रुप में देर इज मोर फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी. एज आई सेड प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है डिस्टेंस. तो इस वाले केस में देर इज अ लॉट ऑफ क्लोज इंटरेक्शन. सो जैसे फैमिली आप खुद तो नहीं ज्वाइन कर सकते, इट्स नॉट योर चॉइस, इट्स गिवन टू यू, राइट. सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, रिलेशंस आर इम्पर्सनल एंड लेस फ्रीक्वेंट. थर्ड, प्राइमरी ग्रुप में बाउंड्रीज आर लेस परमिएबल, मतलब आप जल्दी से प्राइमरी ग्रुप को छोड़ के नहीं जा सकते या जल्दी से उसको ज्वाइन नहीं कर सकते. सो द बाउंड्रीज आर लेस परमिएबल. बट सेकेंडरी ग्रुप दे आर ईजियर टू ज्वाइन और टू लीव. नाउ एग्जाम्पल्स, फैमिली, एंड सेकेंडरी ग्रुप का एग्जाम्पल इज अ पॉलिटिकल ग्रुप. So this is the differentiation that you can use for primary versus secondary का question if it comes. Now let's talk about another type of group जिसमें आता है formal versus informal. बहुत easy है. formal group होता है कोई office setting, informal group होता है आपका friend group. So formal group में क्या होता है, functions are explicitly stated कि अच्छा आपका ये रोल है, आपको ये काम करना है, आपके मैनेजर का ये रोल है. द फंक्शंस आर स्टेटेड. बट इनफॉर्मल ग्रुप में ऑब्वियसली आपको फ्रेंड ग्रुप ऐसे तो नहीं ज्वाइन करते ना कि नाउ ओके आई विल हैव दिस रोल, आई विल फॉलो दिस फंक्शन. सो फंक्शंस आर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड. फॉर्मल जो ग्रुप्स होते हैं जैसे ऑफिस, यूनिवर्सिटी सेटअप, स्कूल सेटअप्स, दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स और लॉज. जैसे अगर आप अपने स्कूल का डायरी खोल के देखेंगे तो देर आर सर्टेन रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो, राइट. बट इन अ फ्रेंड ग्रुप देर आर नो सच रूल्स और लॉ, सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रूल्स और लॉ. एंड थर्ड एग्जाम्पल, ऑफिस या यूनिवर्सिटी, एंड इसका एग्जाम्पल इज योर फ्रेंड ग्रुप. नाउ द थर्ड काइंड ऑफ ग्रुप जो हम डिस्कस करेंगे इज इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप. बहुत सिंपल है. इन ग्रुप मतलब मेरा ग्रुप, आउट ग्रुप मतलब किसी और का ग्रुप. सो वंस ओन ग्रुप एंड अदर्स ग्रुप. हम अपने ग्रुप के मेंबर्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, वी, हमारा, है ना. सो द टर्म दैट वी यूज़ फॉर इन ग्रुप इज वी. बट अदर्स ग्रुप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वो, है ना, उनका. सो वी यूज़ द वर्ड दे. एंड इन ग्रुप में मेंबर्स आर व्यूड फेवरेबली एंड सिमिलरली कि अच्छा ये तो हमारे ग्रुप का पार्ट है. बट इन द केस ऑफ एन आउट ग्रुप हम उनको डिफरेंटली देखते हैं कि ये लोग हमसे डिफरेंट है. सो थर्ड डिफरेंस हियर इज मेंबर्स आर व्यूड डिफरेंटली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सोशल loafing. Very important, please remember this. तो इसका जो क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो दीज थिंग्स. What is social loafing? What are the causes of social loafing? And how can it be reduced? तो ये तीन चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए. इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन या डायरेक्टली भी आ सकता है, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So let's first focus on the what. What is social loafing? तो social loafing basically क्या होता है? It is a reduction in individual effort when working on a collective task. मतलब कि आप एक ग्रुप के साथ कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो लेकिन आप मेजॉरिटी का एफर्ट्स कम हो गया. फॉर एग्जाम्पल, सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल, जब हम टग ऑफ वॉर खेलते हैं तो देयर माइट बी अ फ्यू पीपल जो पूरी जान लगा के खेल रहे हैं, बट देयर वुड बी सम पीपल जिन्होंने सिर्फ हाथ लगाया हुआ है. दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सोशल लोफिंग बिकॉज देर इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस बट देर इज अ रिडक्शन इन एफर्ट्स. सो दिस इज कॉल्ड सोशल लोफिंग. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि सोशल लोफिंग होती क्यों है? व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस for social loafing? So why does social loafing occur? First, group members feel less responsible for the overall task being performed. अब ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सब कर रहे हैं ना, तो हम क्यों एक्स्ट्रा मेहनत डालें. So they don't feel responsible enough. Second, motivation of members decreases because they realize that their contribution will not be evaluated individually. अगर आप कोई काम अकेले करो तो सबकी नज़र आप पे है,
बट वेन डूइंग इन अ ग्रुप पीपल यूजुअली टेंड टू थिंक यार हमें कोई अपने आप से अकेले थोड़ी ना देख रहा है, सबको देख रहे हैं, तो हमारा इतना कोई ज़्यादा रोल है ही नहीं. सो दिस लीड्स टू सोशल लोफिंग. थर्ड, द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप इज नॉट टू बी कंपेयर्ड विद अदर ग्रुप्स. जब आपकी सिर्फ आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस देखी जा रही है, किसी और से कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो इन केसेस में सोशल लोफिंग ज़्यादा होता है. फोर्थ, देयर इज एन इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द ग्रुप मेंबर्स. एंड फिफ्थ, बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंबर्स. मतलब कोहेसिव नहीं है ग्रुप, इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ग्रुप ही तो है, एक टास्क ही तो है. व्हेन पीपल स्टार्ट थिंकिंग दिस, सोशल लोफिंग यूजुअली क्रीप्स इन. एंड very important, how can social loafing be reduced? First, making efforts of each person identifiable. तो ग्रुप को ये बताना कि आप सब इस ग्रुप में इम्पॉर्टेंट हो, आप सबका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो मेकिंग पीपल फील आइडेंटिफाइड, मेकिंग पीपल फील इम्पॉर्टेंट इज वन ऑफ द ways by which social loafing can be reduced. Second, increasing the pressure to work hard. Third, increasing the importance of the overall value of the task. कि ये टास्क बहुत वैल्यूएबल है, अगर ये टास्क हम नहीं जीते तो ये हो सकता है, अगर हमने ये टास्क पूरा नहीं किया तो ये हो सकता है. सो बेसिकली मेकिंग द टास्क इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल may also reduce social loafing. Fourth, making people feel that their individual contribution is important. एंड फिफ्थ, स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस. क्यों? क्योंकि जब ग्रुप कोहेसिव होगा, ज़्यादा एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेगा, टुगेदरनेस होगी, म्यूचुअल अट्रैक्शंस होंगे, तो दैट इज़ व्हेन पीपल विल फील कि हाँ मेरा ग्रुप तो बेस्ट करना चाहिए एंड आई विल डू एनी थिंग फॉर दैट टू हैपन. सो व्हेन देयर इज मोर कोहेसिवनेस, इट्स ऑब्वियसली मोर कोहेसिवनेस इज बैड, बट मोर कोहेसिवनेस मीन्स लो सोशल लोफिंग. And now let's talk about the last topic, which is group polarization. Somehow ये टॉपिक से सब भागते हैं, probably because ये लास्ट में आता है, but group polarization is pretty important. Now let's try to understand what group polarization is. यहाँ पे इस word पे focus करो, polar. This word is deriving from the word poles. So there are two poles. या तो ये हो रहा है या ये हो रहा है. So let me explain this to you easy before we dive into its reasons or its keywords. जब आप एक ग्रुप का पार्ट है तो दो ही चीज़ें हो रही हैं, एक्सट्रीम डिसीजंस लिए जा रहे हैं, या तो डिसीजन ए लिया जा रहा है या डिसीजन बी लिया जा रहा है. देयर इज़ नो डिसीजन सी. डिसीजन सी को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा, मिडिल ग्राउंड पे कोई आ ही नहीं रहा. सो देर आर ऑलवेज एक्सट्रीम डिसीजंस. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला गया कि ठीक है यू नो दिस पर्सन हैज़ डन समथिंग सो यू नीड टू पनिश दिस पर्सन, और आप एक ऑफिस में मैनेजर हैं, तो आप बोलोगे चलो ठीक है इसने ऐसा कर दिया, बेचारा इसकी जॉब भी है, तो कोई बात नहीं, हम इसको 15 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो दिस इज लाइक अ मिडिल ग्राउंड दैट यूर फाइंडिंग. बट इन द केस ऑफ ग्रुप पोलराइजेशन दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप उसको जाने दोगे, सो डिसीजन ए इज दैट यू लेट दैट पर्सन गो, एक्सट्रीम डिसीजन अगेन, और देयर वुड बी अनदर कंसेंसस डिसीजन बी कि नहीं इसको तो हमें परमानेंटली सस्पेंड कर देना चाहिए और इसको किसी जगह भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए. Extreme decisions. Do you see the extremeness of the decisions? So in case of group polarization, usually extreme decisions लिए जाते हैं. This is called group polarization. Let's see how it can be defined. So it has been found that groups are more likely to take extreme decisions than individuals alone. This is called group polarization. ठीक है, so the keywords that we'll focus over here are it has been found that groups are likely to take extreme decisions than individuals alone. तो ये दो चीज़ें तो आपको लिखनी है, extreme decisions as compared to individuals alone. Now, why does group polarization occur? First, in the company of like-minded people, you are likely to hear newer arguments favoring your viewpoints. तो मतलब अगर आपका viewpoint था कि हाँ हमें इस इंसान को निकाल देना चाहिए, बट आपके पास कोई रीज़न नहीं है, तो सामने से बंदा दूसरा कोई कहता है कि हाँ इसको निकालना चाहिए और फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि इसको कोई और जॉब ना मिले क्योंकि इसने इतना बड़ा कुछ कर दिया.
सो एंड देन यू थिंक हाँ मे बी आई वॉज राइट व्हेन आई सेड कि हमें इसको निकाल देना चाहिए. तो आपका आर्ग्यूमेंट यहाँ पे स्ट्रेंथन हो रहा है. सेकेंड रीजन ओवर हियर इज व्हेन यू फाइंड others also favoring your decision, you feel that this is being validated. मतलब आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ सही ही बोला है, so you're feeling validated. This is called bandwagon effect. Very very important term when you write about group polarization. And third, when you find people having similar views, you perceive them as in group. ओ इसने मेरी तरह सोचा, आज से मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है. You perceive them as your own group. Remember when we talked about similarity? The same concept applies here as well. So group polarization को छोड़ के मत जाना, बहुत important topic है. Please do give it a read. And it's very easy, it's not difficult. So you should know definition of group polarization, one example, and the 3 reasons जिसकी वजह से group polarization occurs. So this was all about chapter 7. Please don't leave this chapter. I know इसकी weightage comparatively कम है, but it's such an easy chapter. Also please do remember that इस question से case based study questions बहुत सारे आते हैं, and in case of case based study question always relate your answer to your question. So अगर question में लिखा है, नाम लिखा है Mr. X, so you have to write Mr. X in your answer. You cannot just ratify and give your answer. Always relate your answer to your question. Next chapter that I'll be covering will be chapter 6. So stay tuned and see you guys.